notepad. And I hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Perfect. Okay, let me just create a new. Okay, so like I haven't created any PPT, anything. We'll just discuss like old schools. Okay, all right. So, guys, as you know, right, from the starting, we are going to cover about Python as this is Selenium with Python. So, we are going to first focus more on the Python prompt, where I'm going to teach you first initially like what Python is about, what is the importance, what are the methods we are having, what are the basic methods we are having. Then after we'll move about towards the data types, tuples, dictionary, list, set, all these things. And then we will move towards the object-oriented Python, and I'll tell you like how we can use the different modules, how we can create packages in Python, how we can just work on it. So the first focus we are going to have is on Python itself, right? Okay. Along with this part, as we are doing the Python learning, we will keep parallelly we are going to learn about GitHub. So we're definitely going to push our code into Git, and we are going to discuss on that, like how we are going to do that and what are the GitHub commands which we are going to work upon. And apart from this, we are going to start a Docker and Jenkins. So these four combination we are going to work together from day one itself. So इनिशियली मैं आप लोगों को पाइथन पे थोड़ा सा ग्रास्प करवाऊंगा, उसके बाद गिटहब, डॉकर और जेनकिंस, इन तीनों एप्लीकेशंस को हम लोग पैरेलली पाइथन के साथ ही सीखेंगे, जिससे कि जब हम लोग फ्रेमवर्क क्रिएशन पे आएंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को इतना नया नहीं लगेगा ये सारा टूल सेट. It will be like you are working in this like over last 1 month, so it will be very easy for you to grasp all these. Okay. So this is something about what are the tool sets. Apart from this, whenever we are going for Python, so we are going to learn about PyTest. So PyTest, guys, is a framework which is very helpful in terms of whenever we do the unit testing in Python. So we are also going to learn the PyTest, and with the PyTest, we are going to actually start creating the framework in page object model, how to create basic methods, how to initiate browsers, what are the things we do in the Selenium. So all those stuff we are going to do in the Python PyTest. And then we are going to a little bit move towards the BDD Cucumber framework. So I'm going to teach you like how basically in terms of Cucumber, the BDD approach in the Python. So Python Cucumber we are going to use here, where actually how we can create a very robust framework using this Python, and how we can create automation frameworks like keyword driven, data driven, and BDD like behavioral driven. All these three flavors I'm going to teach you as part of this course, this particular syllabus. Apart from this, okay, we are going to have a good sessions on API as well as database. So API test, like how we do the API testing, as well as how do we perform the database testing. So basically using Python itself. So basically um, like how do we create a database, how do we perform some basic commands like insert, update, all these things. Then how do we use joins in that, how do we use group by. So all that information, all that knowledge and practical knowledge, not only like in terms of papers. We are going to create a database, we are going to run all these commands in database. So that's something I'm going to teach you as part of database understanding, because most of the people who is joining this course, and obviously they're looking for some switch in different companies, or they're looking for some kind of new job roles. So there nowadays people are asking more about database, people are asking more about interview, are asking more about APIs, especially about Selenium, especially about Python methods. There are so many things in Python, so we are going to learn most of them. Okay. And once we're good with all this, we are going to conduct you some mock interviews. So this is what the additional services which we are going to conduct for you guys. So mock interview and exams. Okay. And this course is full of assignments, so you guys have to complete your assignments within timeline, and based on your performance we'll give you a chance for the mock interviews. If you guys will work hard, definitely
and the mock interview will be conducted for you. But if you guys are not doing your assignment properly, then I think will not, it's something, it is your job to work hard to get the mock interviews scheduled for you. Okay. So this is, guys, this is about the syllabus. If anyone has any doubt, just ask me about it. Apart from this, this is something that's extra services which we are going to provide as part of Testometer. And yeah, I'll take a pause and I want you guys to ask me doubts, whatever you have in mind. Yeah. Vaibhav, I have one question. Yeah, please. So, whatever the content we are covering of Python, is it Yeah. means only related what we are going means what we need uh, for testing or Okay. means overall Um, Python? Actually, there is no one can decide that this is required for testing or this is not required. The thing is, whatever a basic and advanced Python required. Okay. Okay, So we are going to learn the object-oriented Python as well as we are going to learn basic Python concepts, all the exception handling, multi-threading, whatever, the main basic concepts we require. All those we are going to study. But if we talk about the very advanced level, like, okay, how do we create a web application in Python? So that's something we are not going to cover. But yes, with okay, after once you will learn the Python, you will be able to create a small application. You will be able to create frameworks in Python. So that level of knowledge, you definitely guys will have. okay. Yep. Thank you. Yeah. Okay. Yes, Hello. guys. Yeah, hello. Hi, Vaibhav. Yep. Yeah, Avanti. yeah. Actually, my question is there any project will you cover in this session? Absolutely. We will have like 3 to 4 real-time projects. We have actually 3 real-time projects. Okay. So मैं क्या करता हूँ ना, most of the time that um, based on of your performance मैं आपको real time project align करता हूँ. If you guys, मेरे पास around 6 to 7 real time projects हैं, उसमें से मैं आपको 4 real time projects करवाऊंगा जिसमें सबको अलग अलग रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट कि इसको ये मिल रहा है उसको मिल रहा है, बट द पॉइंट इज कि आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा उस हिसाब से उस लेवल का प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा. ओके. सो आप अपने असाइनमेंट फिनिश करो, आपके एग्जाम्स होंगे, उसमें आपका जैसा परफॉर्मेंस आ रहा है अकॉर्डिंगली आई विल प्लान इट फॉर यू. बट यस, वी आर गोइंग टू हैव 3 रियल टाइम प्रोजेक्ट फॉर श्योर. ओके. ओके. और मेरा और एक क्वेश्चन था कि अभी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि जावा विथ सेलेनियम और पाइथन विथ सेलेनियम का कंपैरिजन कैसा है आज मार्केट में? Okay. To be honest, Java with Selenium और Python with Selenium में obviously Java का भी मार्केट बहुत अच्छा है with Selenium. Okay. मैं मतलब मैं किसी को फॉल्स होप नहीं दूंगा, बट द पॉइंट इज कि पाइथन का मार्केट इज लाइक इतना कम नहीं है. अगर मैं बोलूं 100 जॉब्स में से मतलब 55 अगर सेलेनियम विद जावा है तो 40% सेलेनियम विद पाइथन भी है. ओके. मार्केट में आजकल इतना रिक्वायरमेंट है पाइथन का. एंड द थिंग इज most of the companies actually moving towards AI ML models nowadays. Okay. And apart from Java इतना सपोर्ट नहीं करती अभी AI ML को क्योंकि उसके इतने मॉड्यूल्स नहीं आए. पाइथन एक्चुअली जैसे सेलेनियम विद पाइथन को बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए अब आने वाले नेक्स्ट आई वुड से 1 ईयर में आपको सेलेनियम विद पाइथन की बहुत रिक्वायरमेंट मिलने वाली है. आई एम श्योर अबाउट इट. वाई? बिकॉज अभी बहुत सी कंपनियां चैट जीपीटी, एआईएमएल इन सब पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो अपने फ्रेमवर्क्स को कैसे एआईएमएल के कंपेटेबल बनाना चाहेंगे. तो बिकॉज ऑफ दैट this requirement will be very huge in next sum of times. So it is a good time to learn these technologies. But yes, to be honest, अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज के टाइम में सेलेनियम विद जावा का मार्केट अच्छा है देन सेलेनियम विद पाइथन से. ओके, यस. और ओके. ड्यूरेशन ड्यूरेशन 2 मंथ का है क्या कोर्स कंप्लीट? यस. तो ये हमारा जो कोर्स है, दिस इज वी 1 मिनट, दिस इज वीकडे कोर्स, राइट? राइट अक्षय, और वीकेंड? Weekend, weekend. Yeah, we can.
Yeah, okay. If this is weekend, then the I think the duration will reach like 2 months to 2.5 months. क्योंकि sometime it happens क्योंकि we have only 2 days, Saturday और Sunday. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई या फिर समटाइम्स इफ आई एम नॉट अवेलेबल समथिंग लाइक दैट. सो कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 मंथ से 2.5 मंथ तक चला जाता है, बट उतना मैक्सिमम 2.5 मंथ इज मैक्स, नॉट मोर देन दैट. ओके यस सर, थैंक यू. ओके. क्योंकि टाइमिंग क्या रहेंगे सैटरडे संडे के फॉर क्लास? Okay. That actually we will discuss and I'll tell you, but probably the timings, if I would say, I think 10 a.m. to मेरे ख्याल से 10 a.m. to 11 अराउंड रहेगा, क्योंकि 8:30 to 10 ऑलरेडी एक बैच रहता है, तो 10 a.m. मेरे ख्याल से इट विल बी द टाइम ऑन वीकेंड. ओके, थैंक यू. And with respect to cost and all, who will guide us? Okay, regarding the cost, I think Akshay is the right person, not me. If you have any question regarding the cost, regarding certification, course completion, certificate, I think Akshay can help you better in this. So Akshay, is it Yes. good time to talk about that or we'll I talk? सब इंफॉर्मेशन आपके मेन ग्रुप में आ जाएगा, जो भी आपका प्री डेमो का ग्रुप है ना उसमें आ जाएगा. ओके. Sure. Yeah. Thank you. अक्षय ऍड करतात का आता सगळ्यांना? म्हणजे मी ऍड नाहीये त्या ग्रुपला येस, व्हॉट्सअप. मी ग्रुपची लिंक इथे चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो, सो तुम्ही जॉइन व्हा डायरेक्ट. ओके. right. ओके. या. तो अक्षय चैट बॉक्स में एक बार लिंक डाल यस दीजिए. यस यस. Okay. So yeah, I think this is. But yes, if you have any doubt regarding key, is this the content what you are expecting from the course? You want to know something about me? You can definitely. Yes, this is the right time you can ask. Hello. Yogesh, here now we are talking about the mock interviews, right? So Yes. are we going to get any company to give the interview? That means kind of companies No, actually, the mock interview means, okay. Why you are joining this course, Latika? to learn at this moment. To learn at this moment. Okay. Yeah. Mock interview, why do we provide is most of the people actually they are new to this technology, or they are looking for switches, or they want to change their role. बहुत सारे लोग manual में होते हैं, they want to go to automation. Some people want to change the company and all, like there's so many reasons or factors out there. So mock interview का फंडा क्या रहता है कि we actually give them a feedback, honest feedback. This is where you are lacking in your. We'll ask questions, we'll see how much confidence he or she is showing, what is the coding level she is just showing us, and accordingly then we give them the right feedback. So that after, because obviously बात है, आप उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे तो it will be a, आपको वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. Because sometimes it's like learning is a different experience rather than explaining it to the interviewer is a different call. So वो एक चीज को सही सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, वो एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए we just provide these mock interviews. So this will be done from me and test meter, both of the sessions. Okay, got it. Yeah. Thank you. Okay. Hello. Yeah, hi Omkar. एक क्वेश्चन है कि एडिटर कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग? हम लोग okay. Initially to learn for Python, we are going to use Jupyter, and then we will move to PyCharm. So PyCharm actually JetBrains का ही एक एप्लीकेशन वो है जो हम यूज करते हैं अपने इसमें for the Python development. हम PyCharm यूज करेंगे. That way. Yes, Sagar. So can you hear me? Yes, Sagar, I can. Tell me. Perfect. Okay. So when do we decide that when we are going to use Selenium with Python? Like it depends, right? When to use or when not. Okay. So
means your question is little confusing, but okay, means let me just rephrase it. You want to understand Yeah. when company decide and when you decide that Right. Selenium with Python we are going to use or Selenium with some other language. Right. Okay, right. So देखो, the answer is very simple. There are so many factors for this. Okay, suppose let me give you one scenario, and definitely I think you can answer that. Suppose you have a project where you have like 100 people. Okay, out of 100 people, 90 people knows Python very well, but 10 people are no. I mean to say 10 people are good in C sharp and Java, some different languages. And that time, if we are coming up with an approach to okay, we need to create an automation framework. So what do you think? Which language will win in that race? Of course, the Python, because we have the majority, right? Correct. So I will not say that that is the right choice. I'm not saying that. But the point is there are so many factors in a project depends that we are going to go with this framework or that framework. Or there is nothing like it, Java is not good or C sharp is not good. It's something about कि आपके project में what type of bandwidth people are having, what type of skill set they are having. Because obviously when people are asking for any POC, and if you don't know about Java, if you don't know about C sharp, and you are comfortable in Python, so आप लोग Python से ही POC करोगे, right? So this is one factor which we always measure that आपके team में क्या structure है, किसको क्या चीज आती है. Second चीज is whenever we are required a very fast generating frame, आपके पास deadlines थोड़ा सा कम है. सॉरी आपकी टाइट डेडलाइन है कि वी हैव टू डिलीवर अ ऑटोमेशन फ्रेमवर्क विद इन 1 month or 2 month. एंड पाइथन में चीजें डेवलप करना इज लिटिल बिट इजियर देन जावा, बिकॉज जावा में चीजों के लिए बहुत सारी हमें प्लगइन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू परफॉर्म. सो दैट इज वन ऑफ द प्लेस जब आपको थोड़ा फास्टर डेवलपमेंट चाहिए होता है, पीपल एक्चुअली गो फॉर पाइथन. बट यस, I am not against any language, but yes, there are so many factors which depend this path. Understood? Yeah, thank you. I have seen a lot of projects where people are actually, लोग एक्चुअली पर्ल के साथ भी सेलेनियम को यूज कर रहे हैं, पीएचपी के साथ भी कर रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि वो उतना कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ. बट उन लोगों को जावा नहीं आती, पाइथन नहीं आती है, तो उनको पीएचपी में कॉन्फिडेंस है, तो वो उसके साथ उसका यूसेज करते हैं, राइट? सो ऐसे मैंने बहुत से प्रोजेक्ट देखे हैं जहां पर बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बन जाता है, एंड accordingly then we go with that specific. Yeah, thank you. All Vaibhav, right. I have one question. Yes, Swapna? So what kind of a project we are going to see, means a domain, what domains? That's a good question. So the first question, okay, we are going to do 3 to 4 real time project. पहला real time project जो हमारा होगा वो होगा आपको पाइथन की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, उसका ऑटोमेशन से कोई रिलेशन नहीं होगा. ओके, सो उस प्रोजेक्ट में हम लोग कवर करेंगे, मैं आपको कुछ इस तरीके के सिनेरियोज में डालूंगा जहां पे आप पाइथन का यूज करके एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को समझोगे कि व्हाट इज एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज अबाउट, कैसे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, कैसे हम टपल को यूज करते हैं, डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं, राइट? सो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट इस फैक्टर पे होगा. ओके, सेकंड रियल टाइम बाकी के जो 3 होंगे उनमें से तीनों वेब के होंगे, लेकिन एक क्या होगा, एक आपका रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन होगा जिसमें कि हम देखेंगे कि वो मोबाइल जैसे उसका स्क्रीन चेंज होता है तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा. तो दैट्स समथिंग वी विल डिस्कस. सेकंड पार्ट, एक प्रोजेक्ट जो होगा वो एक नॉर्मल वेब प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम नॉर्मल चीजें करेंगे, लाइक क्लिकिंग, सेंड कीज, ड्रैग एंड ड्रॉप, जो भी चीजें हम करते हैं अपने एप्लीकेशन में एक एज पार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेस्टर. सो वो सब चीजें रहेंगी. एंड तीसरा एप्लीकेशन थोड़ा सा हम लोग एंगुलर लेवल पे लेकर आएंगे, जिसमें मैं आपको कुछ नई चीजें और सिखाऊंगा कि एंगुलर में कैसी चीजें होती हैं और कैसे बेसिकली आप पाइथन के थ्रू एंगुलर एप्लीकेशन को कर सकते हो. इन तीनों रियल टाइम प्रोजेक्ट का अलग अलग एजेंडा है, मतलब अलग अलग लर्निंग कर्व है. तो वी लर्न ऑन दैट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एप्लीकेशन में एपीआईज भी होंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एपीआईज मतलब कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे आपका गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट सारे चीजें काम करती हैं. तो वो सब रियल टाइम प्रोजेक्ट का पार्ट रहेंगे.
Okay. So the agenda of these real-time project to giving you a actual idea कि क्या चल रहा है, क्या होता है, how does this work, okay? और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मेरे को प्रेजेंटेशन भी देनी होगी कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, okay? So Okay. Okay. I mean to say it will be a good experience for you guys. Yes. Yes. Yeah. So means this project, not about this project actually. So this automation testing also covers the UI testing, means the UI testing comes under manual. नहीं, UI टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग. उसको आप Yeah, किस but तरह से करते हो ये डिपेंड करता है ना. अगर आप उसे मैनुअली कर रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली बात है ऑटोमेशन करने से पहले आप उसके मैनुअल टेस्ट केसेस लिखोगे, राइट. yes. सो वो सब चीजें, देयर विल बी वन टास्क इन दैट प्रोजेक्ट व्हिच यू गाइस हैव टू डू, देन आई विल रिव्यू इट. फिर हम उसको ऑटोमेट करेंगे. उससे क्या होगा कि आपका एक मैनुअल स्किल भी जनरेट होगा, बट मैनुअल स्किल में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. But this course is not cover the any manual testing, I mean to say concepts. But मैं आपको Okay. बता दूंगा कि आप इस तरीके से बनाओ, but ये mainly हमारा automation oriented courses है. Okay. Okay. Right. For manual testing, testometer के दूसरे courses हैं ISTQB के, where you can join and No, no. I mean, I just had confusion कि मतलब ये UI टेस्टिंग सिर्फ मैन्युअली होता है या फिर नहीं, अरे UI टेस्टिंग मैनुअली नहीं, UI टेस्टिंग मैनुअली एज वेल और दोनों से होता है, ऑटोमेशन से भी होता okay, yeah. है. UI टेस्टिंग, Selenium is UI टेस्टिंग टूल ओनली. सेलेनियम से आप एपीआई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो, केवल यूआई टेस्टिंग में काम आता है सेलेनियम. एपीआई के लिए अलग पैकेजेस होते हैं पाइथन के, डीबी के लिए अलग पैकेजेस होते हैं व्हिच टू बी यूज. ओके. Okay. Yes guys, any other question? Hello. Yeah, I am. टेस्ट रेंज और पाइटेस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रेमवर्क कौन सा है? Okay. I think देखो, all right, let me ask you one question. Okay. I think then you can answer it. एक आपको चाय बनानी आती है? हाँ, यस. आती है. ओके. अब सोचो यस. कि आपके घर में एक मेहमान आया, ओके, और वो मेहमान इंडियन है, तो आप कैसी चाय उसको बना के दोगे? जिंजर टी बना के दोगे या ब्लैक टी बना के दोगे? जिंजर टी. राइट, क्योंकि वो उसको वो चीज पसंद है. सही बात है ना, क्योंकि वी आर फ्रॉम दैट Yes. कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग जिंजर टी. अब वहीं पर आपके घर पे एक फॉरेन बंदा आता है, आप उसको कैसी टी बना के देंगे? जिंजर टी देंगे या ब्लैक टी देंगे? ऑफ कोर्स ब्लैक टी ना, तो राइट. ज्यादा ही है, मतलब तीखा पसंद नहीं है इसकी वजह से. यस, करेक्ट, राइट. सो द बेसिकली फ्रेमवर्क के साथ भी यही फंडा होता है कि फ्रेमवर्क किस प्रोस्पेक्टिव से बनाया जा रहा है, किस पर्पस के साथ हम लोग फ्रेमवर्क को डिजाइन कर रहे हैं. तो पाईटेस्ट जो फ्रेमवर्क है ना, पाईटेस्ट फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया क्योंकि आप यूनिट केसेस टेस्ट कर पाओ. और यूनिट टेस्ट केसेस कौन करता है टेस्ट? एक डेवलपर, राइट. अगर आप Yes. थोड़ा सा, राइट, रेदर देन अगर हम टेस्ट एनजी की बात करते हैं, तो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क इसने बनाया गया जिससे कि हम उससे ऑटोमेशन टेस्टिंग कर पाए. तो बेसिकली आप इसलिए कभी भी देखना, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क कोई से भी होंगे, उसमें उतनी ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे जितने फीचर्स आपको ऑटोमेशन वाले फ्रेमवर्क में मिलते हैं. क्यों? क्योंकि यूनिट टेस्टिंग में आपको क्या करना है? केवल एक मेथड को टेस्ट करना है. तो उसमें आपको एक नॉर्मल टेस्टिंग क्राइटेरिया होगा, रेदर देन उसमें फिर आप डेटा डाल दो और टेस्ट कर लो, दैट्स इट. कुछ भी ज्यादा फैंसी एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं. रेदर देन जब आप टेस्टिंग फ्रेमवर्क की तरफ जाते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे यार इसमें तो डेटा प्रोवाइडर है, इसमें ये भी है, उसमें लिसनर भी है, फलाना 20 चीजें होती हैं उसमें. तो जब आप ये सब चीजें कर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये यूनिट टेस्टिंग के लिए नहीं बना है. दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क इट एक्चुअली डिजाइंड फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग. तो उसमें आपको सिस्टम टेस्टिंग कैसे करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करनी है, स्मोक सैनिटी तो चलो हम कर ही लेते हैं नॉर्मली. तो
basically the intent is very important, and this is where these two frameworks are different. So I'm not saying this is better or this is not better. The thing is, PyTest we use for the unit testing purpose rather than TestNG. Most of the people use for integration testing, system testing, and automation testing. अगर मैं automation perspective से बोलता हूँ. So this is the basic difference. If right, so intent actually is different for both the frameworks. So no framework is strong or किसी framework में ये नहीं कि ये strong है या ये weak है. सब फ्रेमवर्क का अपना अपना एक pros and cons होता है, तो just you need to figure that out and then you need to use it. That's the only part. Okay. All right. Any other question, guys? So are we good? Okay, no problem. If you guys have any other question, just post it in the group. Okay, I will be answer it as if it is related to some other, different queries. Then I think Akshay can answer it. But अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज है, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट. ओके, सो आप लोग उसको ग्रुप में डाल दो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं. ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक नेक्स्ट वीक. So today is 11, so our start date will be next Saturday. Same, I'll just update the time in group. So probably it will be 10 a.m. IST. So हम उस time पे guys connect करेंगे and we'll start our sessions that day. Okay? Any question? ग्रुप में आप भी अवेलेबल है क्या सर उस ग्रुप में? एक मिनट रुको. Yes, मैं हूँ. I will be there. Yes. Okay. एक request है, can we get started it after Diwali? Okay, when is the... Okay, because okay. this weekend, because most of the folks would be traveling to hometown and all, right? Right, right. I understand. So दिवाली का कब है हमारा ये? दिवाली है 14 को, तो मतलब अभी उसके पहले जो वीकेंड आएगा वो 11-12 आएगा, तो Correct. उस टाइम. Okay, so what we'll do? I'll tell you. हम क्या करेंगे? हम 11th और 12th में से एक दिन कनेक्ट करके we will just install the software. That's it. Hello. Yeah. Sorry, sir, for interruption. Sir, 11 and 12 is Diwali week, so we will start after Diwali. Okay, तो फिर हम 18 से प्लान कर रहे हैं, right? स्नेहल, अक्षय. It will be too late actually. Okay. Wait. I'll just post it in the group. Don't worry. कि अगर नेक्स्ट वीक दिवाली है तो मेरे ख्याल से फिर वो छुट्टी रहेगी, तो देन आई थिंक वील स्टार्ट फ्रॉम 18. बट व्हाट आई वाज प्लानिंग कि बस अपने को बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे ना. सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन विल टेक ओनली 30 मिनट्स. कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, दैट एक्चुअली आई रियली वुड लाइक टू डू दैट, क्योंकि फिर 18 और 19 से हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे कोडिंग. वरना फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम जाता है, क्योंकि सबकी मशीन कौन सी मशीन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. सो दैट इज द थिंग. बट ओके, इफ दैट इज द केस वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 18th नवंबर विल बी द गुड डे. तो 11 को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो बेटर रहेगा. यस, दिस इज व्हाट माय आइडिया. यस, बोलो. Sir, for software installation, we can take class also. Sorry. Maybe. For Okay. installation, we take class For tomorrow. installation, what we can do then? Okay, let me tell you one thing. Tomorrow evening, can we guys connect for the software installation only? Only half an hour I need from your time. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So I mean to say Sunday evening will be the right date. Okay. So Yes, I will ping the time there. Don't worry. मैं time ping करता हूँ आप लोगों को, and then
we'll be able to do that. Chalega? Yes. Yes, sir. All So, Vaibhav, if you can means post in group what kind of software we are going to need, so everyone will keep actually those downloaded. मैं बताता हूँ पाइथन तो हमें लगेगा ही, उसके अलावा गिटहब में अकाउंट बनाना है, डॉकर डाउनलोड करना है, जेनकिंस और पाइचार्म, ये 5 चीजें अपने को लगेंगी। तो मैं पोस्ट करता हूँ, I'll post in group. Okay, so that means I'll request everyone to keep this downloaded so that it will save our Correct, time. चलेगा, and yes, that makes full sense. Yes, so yes, absolutely. So let me just post it in the group. What are the softwares you need? Okay. Yes. All right. Okay, I think then we are good to close if we do not have any other question, guys. No. चलेगा? Just Okay. one second, could you please, whatever the software is required for us in the WhatsApp group as well? ये मैं करता हूँ. I'll do this. Just give me a minute. Thank you. Thank you, sir. All right, guys. Chalo, bye bye. Take care. Thank you. Okay.